Hey guys, what's up? Good afternoon, everyone. Welcome to Unacademy. Let's crack foundation in NTSE channel. How is everybody? I hope all of you are doing really good, really well. Sab changa hai, sab badhiya hai. If yes, then quickly let me know in the chat box that all is good, all is well, and then we can proceed with ahead. Yes, guys, come on, everyone. Where is everyone? आज ऐसा क्या हो गया? And why don't I see my preview? मुझे अपना ही preview क्यों नहीं दिख रहा? What happened? Okay, I'm gonna wait for a few seconds. Okay, that's it. That's there. Yes, guys, everyone, come on. बेटा जल्दी से join कर लो और if you haven't told your friends about this, tell them about this as well, so that we can quickly start our class on plant tissues and then we'll try to understand few questions भी करेंगे. We'll try to practice as much as possible. We'll make a mind map of plant tissues ताकि हम भूले नहीं. Okay, so क्या बात है, आज बच्चे लोग किधर हैं? Where is the बच्चा party today? Looks like a very few of them are here. ऐसा है. What happened? Okay, there's a stutter now. But why should there be a stutter? Hi, Gaming Rock. Good evening, beta. Sorry, good afternoon, not evening, afternoon. Okay. Hello, Shravan. Vinayak is here as well. Okay, I can see some stutterings happening. I'll wait for a moment so that they settle down. Okay, sir, video lag हो रहा है. हाँ बेटा, video lag हो रहा था. अब ठीक है. Okay, so that happens. Unfortunately, my bad laptop, but I'm just waiting for 3 more days and then my something. Okay, बाद में. Anyways, guys, so we'll quickly begin with the chapter. ठीक है, हम already chapter पढ़ चुके हैं. आज हमें mind map बनाना है और practice करना है. Guys, today is a practice intensive day. आज हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं. अभी हम माइंड मैप बनाने के बाद सेल और टिश्यू से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. रात में वी विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम IJSO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. राइट, तो क्योंकि हम अब दोनों जगह कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ सिलेबस खत्म कर चुके हैं, सेल और प्लांट टिश्यूज फॉर ग्रेड 9, कम से कम रेस्पिरेशन तक फॉर ग्रेड 10. दैट इज वाई अब कॉन्सेप्ट क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घटेगी, प्रैक्टिस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी. बट लेट मी ऑल्सो वार्न यू, you should be really excited about these practice sessions. बट ये मत सोचना it would be a simple Mentee. 4 ऑप्शंस होंगे और आप आसान से बना लोगे. नो बेटा, राइट? Because many questions that I would be sampling would be from IJSO papers, NACB papers, Cambridge papers, है ना? तो उनका लेवल काफी अच्छा होगा. राइट बेटा, डर मुझे भी लगता है. आज मैं पेपर सॉल्व कर रहा था बिकॉज रात में सेशन में मुझे पेपर सॉल्व कराना है. मुझे लगा अरे मैथ्स कहां से आ गया. अब मुझे कैमल का फुटप्रिंट का वो सॉल्व करना पड़ा. आई वाज लाइक ये तो मैंने 10th क्लास में किया था. राइट, सो गाइज, डर मुझे भी लगता है. बिलीव मी, जितना आप डरे होगे उतना ज्यादा मैं भी डरा हूंगा बिकॉज आई एम वीक इन मैथ्स. बट अगर हम दोनों साथ में डरते डरते आगे बढ़े ना, so we can conquer this. Okay, so guys, for grade 10 IJSO paper practices will start from today night. grade 9 के लिए भी अब practice papers आ जाएंगे. Okay, श्रवण प्लीज बेटा चार्ज में लगा लो. सेशन 1 घंटा चलेगा. I will quickly skip over these guys. You already know, प्रोफाइल में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, जल्दी से फॉलो कर लेना. फॉलो करने का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको पता है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी आते हैं ऐप के जब आपको उसको मुझे फॉलो करते हो. ओके सर, आई हैवंट सीन योर मोस्ट वीडियोस, कैन यू टेल मी वेयर टू स्टार्ट? बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है. इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड बाय द एंड ऑफ द वीक. सॉरी, आई एम बीइंग अ लिटिल बिट फास्ट बिकॉज़ आई रियली वांट टू गेट ओवर विद दिस फर्स्ट. ओके, प्राइस ड्रॉप अलर्ट. गाइस, यू ऑलरेडी नो दैट प्राइसेस हैव बीन ड्रॉप्ड अ लॉट. और इस ड्रॉप्स के बावजूद अगर इन ड्रॉप्स के ऊपर भी आप किसी भी टीचर का कोड लगाते हैं, जो मेरा है Sona05, you get an extra 10% off, right? So Shravan and everyone, quickly log on to Unacademy, whether by using your phone or mobile phone. आपको ये सर्च करना पड़ेगा. This should be your goal. उनमें बोला जाएगा
चूज योर गोल. गोल में आपको क्या सेलेक्ट करना है? क्लास 9, 10, ITG, नीट फाउंडेशन एंड NTSE. ठीक है, आपके पास दो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस में यू गेट बैच लाइक कोर्सेज एंड द प्राइस. राइट नाउ यू हैव अ ग्रेट डिस्काउंट, एंड इस डिस्काउंट के ऊपर यू कैन ऐड more discounts by entering teachers codes. So if you can see, you ended up from 802 to 722, right? इसी तरह बेटा आइकॉनिक भी है. आइकॉनिक में प्लस के अलावा यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा. यू गेट पर्सनल कोचेस, यू गेट मेन QA इन प्रैक्टिस, यू गेट अ स्टडी ट्रैकर, राइट? सो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है. और आइकॉनिक के प्राइसेस ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा हैं बिकॉज यू गेट अ वन ऑन वन अटेंशन. एंड यहां भी आप वो कोड लगा सकते हो. ये कोड आप सब जगह लगा सकते हो, बस पेटीएम पर मत लगाना, काम नहीं करने वाला. ठीक है, ओके गाइस. सो विल टॉक अबाउट कोर्सेज, बट बाद में. अभी मैं कोर्सेज की बात नहीं करने वाला. विल टॉक अबाउट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग दीज स्टफ, बट आफ्टरवर्ड्स. राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो टू मेकिंग अ माइंड मैप. सर ज्यादा चैट्स मत पढ़ा करो, टाइम वेस्ट होता है. सबके डाउट धीरे धीरे क्लियर हो ही जाते हैं. बेटा okay, I'll explain you the logic why I read chats but some other day. ठीक है, I'll explain you the logic कि मैं chat इतना ज़्यादा क्यों पढ़ता हूँ. Okay, just a moment बेटा. See, I am kind of rationing my RAM, इसलिए मैंने PPT बंद कर दी because I really don't want कि PPT रुक जाए. Okay, so I wanted to have it done beforehand, but okay, guys. Yep. ठीक है. Cool है. Okay, guys, quickly hop on here. I am closing down my PPT. Let me close down my PPT. That's a lot better. चलो PPT बंद कर दिया. अब कोई स्टटर नहीं होना चाहिए. Okay, guys. चलो. So, सर बेटा इंटरनेट पे ढूंढो तो सही, सब मिलता है. Come on. Please tell me it's working. Oh, it's working. It is. Okay, guys, we'll wait a moment so that my video stabilizes. We'll wait a moment ताकि मेरा video stabilize हो जाए. As soon as that happens, I will kick start. Okay, come on, how is it even possible? Okay, it will. Just give it 1 or 2 more moments. It will. Okay, I think it has, right? It has. The video has stabilized. Okay, great. I don't know how long I will be stuck with this. Okay, anyways guys, let's start creating the mind map. ठीक है, so mind map हमें किसका बनाना है? We have to create a mind map of tissues. Tissues, you already know what is a tissue. Tissue is a group of cells. अब mind map कैसे बनाते हैं ये आप लोग को already पता है. You already know what to create, how to create a mind map. You start from the very middle और very top of the page. आप पेज के एकदम बीच. Come on, is there still stuttering? बेटा वीडियो अभी भी स्टटर कर रहा है? Obviously कर रहा है. Okay, yeah, I don't think it's even possible. Let me just remove this. It's not possible. I was just being, ambitious today. Okay, guys, now things will come better. Guys, don't worry. Everything is okay now. Guys, patience. Just one more moment, guys. Just one more moment.
Chalo, I think this will help. Let's not dwell on things that's not possible. Okay. You can see me, guys? You can see me now? Okay. So, guys, whenever we want to talk about mind maps, एक second, just to ensure PPT on नहीं था. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, guys. So let's start talking about टिश्यूज, है ना. टिश्यू का माइंड मैप बनाना है, स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यूज का. ओके, सो प्लांट टिश्यूज के बारे में विल ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट. कैसे स्टार्ट करेंगे? विल फर्स्ट स्टार्ट दैट प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप. वी से दे आर मेरिस्टेमेटिक एंड वी से दैट दे आर परमानेंट. ठीक है, इस तरह से क्लासिफाई कर दिया कि टिश्यूज आर मेरिस्टेमेटिक और दे आर परमानेंट. ओके, अब simple funda, meristematic tissues are going to convert into permanent. My goodness, I am going to be, my bad guys, wait, just a minute, come on. ओके, आप ठीक है, राइट? आप ठीक है, राइट? व्हाई इज दिस 6 गूगल क्रोम्स? गाइस, ऑल स्कूल नाउ, राइट? अब सही है? ओके, ऑल स्कूल नाउ, ऑल इज वेल. Embarrassing situation, but yeah, let's get. It's, believe me, this is not the problem of online education. Believe me when I say this is not the problem of online education. It's problem of something else. I'll talk about it, but later on. Okay, guys, छोड़ो वो सब. Okay. चलो बेटा. So tissues, when we talk about tissues, we talk about two things. We talk about plant tissues and we talk about animal tissues, right? We talk about these two things, plant and animal tissues, right? Plant tissue की जब हम बात करते हैं, today हमारा topic plant tissues है, right? So we are going to talk about the two types of plant tissues, that is meristematic tissues and permanent tissues. इनके बीच में क्या difference है? What is the main difference between meristematic and permanent tissues? On the basis of division capacity. हमने division capacity के basis पे इनको बांट दिया है. Okay? Wow. What is wrong today? What is wrong? I mean, why? Guys, I'm so sorry for this. I am absolutely sorry. I have closed everything that I could. Chalo, let's close Google Chrome as well. I'm so sorry for this, guys, but believe me, this is not in my hands right now. Okay, if this persists, I will just switch off my video. Maybe that will help. Okay, let's see if, but again, if I switch off my video, that becomes a problem as well. Can't exactly do that. Okay, guys, let's hope इस बार मिटाना ना पड़े. Okay, let's hope इस बार मिटाना ना पड़े. Okay, guys, plant tissues. I'm so sorry for all of this, but okay, guys. So plant tissue, there are two types. Whenever we say, हम कहते हैं कि that's
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दैट इज परमानेंट टिश्यूज, राइट। और इनको किस बेसिस पे बांट दिया है हमने? वी हैव डिवाइडेड देम ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, राइट। नाउ अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम फिर बांटते नहीं है, बिकॉज ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर हैव द सेम फंक्शन दैट दे कैन डिवाइड। हाँ, वी कैन डिवाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्या वो बचपन से हैं, आर दे प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ ऑनवर्ड्स, और आर दे प्रेजेंट फ्रॉम or do they develop afterwards, right? Guys, I really cannot switch off the video. I can't. I know you people think it's doable, but I really can't. I mean, there's logistical problem, and there's a problem that I won't be able to detect if there is a problem happening, right? Let it be. This will have its own ripple effect that will help me. We'll sort it later. मेरे वीडियो पे ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुड बी प्राइमरी और कुड बी सेकेंडरी, राइट। अब प्राइमरी का मतलब क्या है? दे आर प्रेजेंट बर्थ ऑनवर्ड्स एंड दे कुड बी प्रेजेंट एट टू प्लेसेस, दैट इज दे कुड बी एपिकल, यानी कि एकदम टिप्स पे होगा, और दे कुड बी इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब है दे वुड बी एट दी ब्रांचिंग पॉइंट्स, ठीक है। ब्रांचिंग पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं। और इनका काम क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस एपिकल टिश्यू? बोथ ऑफ देम विल बी इंक्रीजिंग द लेंथ, राइट। वो डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, सिंपल फंडा। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट इज दैट बोथ ऑफ दीज wherever they are, they will ultimately differentiate. आशुतोष, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन डिटेल। ये माइंड मैप सेशन है बेटा, ये माइंड मैप सेशन है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम इनको पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, सॉरी। आपको वो पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सी, अगर मैं चाहूं फिर भी इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर मी टू गेट इनटू द डिटेल्स इन जस्ट अ हाफ एन आवर सेशन, इम्पॉसिबल बेटा, ठीक है। सो आपको पूरा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एपिकल एंड इंटरकैलरी टिश्यूज दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? दे वुड बी पिकिंग ऑन स्पेसिफिक रोल्स, राइट। दे वुड बी पिकिंग ऑन स्पेसिफिक रोल्स। और स्पेसिफिक रोल्स का क्या मतलब है? एक कोई पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब बोलने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जब एक मेरिस्टम है वो सिर्फ एक ही काम करेगा, डिवीजन 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 डिवीजन, राइट। बट जब वो परमानेंट बन जाएगा तो इट कुड फॉर्म a simple thin walled cell that could carry out a lot amount of photosynthesis. इसको कहते हैं parenchyma. We call this parenchyma. Okay? We call this parenchyma. एक और दूसरा टाइप का टिश्यू बन सकता है where the walls are thick around the corners. Where the walls are thick around the corners, and when that happens beta, we call them collenchyma. ठीक है, हम उनको collenchyma कहते हैं। There is another type of tissue that's possible, and that is sclerenchyma. Sclerenchyma is nothing but the dead cell wall, ठीक है। और इन तीनों टाइप के permanent tissues में there is just one kind of cells, and because इनमें one kind of cells है, हम इनको group करके बोलते हैं they are simple permanent tissues, क्योंकि there is just one type of cell, एक ही तरह का सेल है, ठीक है। अब इसका एक अदर ऑप्शन भी है। अदर ऑप्शन क्या है? इट्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इट्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब है देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, राइट। नाउ दैट कुड बी एपिडर्मिस और इट कुड बी, come on, complete me बेटा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, finish after me. It could be epidermis, it could be xylem, or it could be phloem. हमारे पास ये चारों ऑप्शंस है। हम xylem हो सकता है, phloem हो सकता है, और we can simply talk about epidermis, right? Now epidermis के बारे में there are few things that we should know, right? क्या क्या? Epidermis is the topmost layer. हम जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ते हैं वी टॉक अबाउट, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे अभी, डोंट वरी। सो वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस और वी टॉक अबाउट क्यूटिकल, एक एक्स्ट्रा लेयर जो क्यूटीन का बना है, राइट। राइट गाइस, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस क्यूटिकल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस क्यूटिकल बेटा? समवन फ्रॉम द चैट बॉक्स हु ऑलरेडी नोज दिस?
Someone from the audience who already knows this? Sir, if sieve tubes are living cells, then how are they hollow? Because most of their organelles are not there. They are not exactly hollow. बेटा वो hollow नहीं है पूरा. Xylem वाले hollow होते हैं. Sieve tube hollow नहीं है, but organelles नहीं है. It's basically cytoplasm somewhere. You load the carbohydrate into the cytoplasm and वो cytoplasm move कर जाता है, right? It's not कि वो पूरा का पूरा hollow होगा, नहीं. That is the property of the xylem, not of the phloem, बेटा. Okay. Now epidermis is cuticle. Xylem के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है? There are four types of cells. We say xylem vessels, we say xylem tracheids, we say xylem parenchyma and we say xylem fibers. और हम कहते हैं parenchyma is the only living tissue, right? Phloem, right? Phloem में क्या होगा? Again, there's sieve tubes. Again, the next one. Come on, finish after me, beta. Phloem में क्या क्या हो सकता है? Okay, the video is badly stuttering today. I don't know what has gotten into my laptop today. Prevents water loss through plasmodesmata. Beta, that is very true. But उसमें plasmodesmata हो ना हो उससे फर्क नहीं होता. Because plasmodesmata is always a connection between two cells. It's not a connection between a cell and the outside, beta. Right? It's a connection between two cells, not cell and the outside. Okay? चलो. Phloem के 4 components क्या हैं? What are the 4 components of phloem? Sieve tubes, and come on, somebody must have remembered these stuff. बाकी के बच्चे क्या हो गया आज? Come on guys, no one remembers? Phloem के parts किसी को याद नहीं है क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? Thank you. Yes, there's sieve tubes and there is companion cells and there's parenchyma and there's fibers. So I meant that does the food in the phloem travel through plasmodesma? Not exactly. It's a modified version कह लो. There are basically holes in the cell wall. Cell wall में holes होंगे, right? जो एंड वॉल होता है वो मॉडिफाई होके सीव प्लेट बनाता है और सीव प्लेट्स में होल्स होते हैं बेटा, जिससे साइटोप्लाज्म ही पूरा का पूरा फ्लो होने लगता है. इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. ओके, फाइनली वी टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ. इतना कर लेने के बाद हम क्विकली सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं. कैन समबडी टेल मी व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? कोई मुझे बता सकता है सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? यस, एनीवन? What happens in secondary growth? किसी को तो याद होगा. Yes. No. Nobody knows what secondary growth? Modified plasmodesmata कह सकते हैं, but not exactly. Plasmodesmata like structure कह सकते हैं, not exactly modified plasmodesmata. Yes, secondary growth is growth in the girth. आपके ये permanent tissues जो आपका parenchyma, collenchyma और sclerenchyma है, not exactly sclerenchyma but parenchymatous tissues, sometimes they can de-differentiate, and when they de-differentiate they can form something known as secondary meristem. ये क्या बना सकते हैं? Secondary meristem. Secondary meristem क्या कर सकता है बेटा? Again, because it's a meristematic tissue, it can divide. Okay, because it's a meristematic tissue, it can divide. And what can it divide into? इसको हम lateral meristem भी कहते हैं. We call this lateral meristem, also known as cambium. Right? Also known as cambium. Now, when we talk about cambium, we talk about two important structures, right?
What are those? What are two important cambiums? Plasmodesmata are holes through the cell wall, beta. Plasmodesmata are holes through the cell wall. Beta, what are the two types of cambium? Vascular cambium and cork cambium. Very good. Vascular and cork cambium. Vascular cambium कहाँ होता है? Vascular cambium कहाँ होता है बेटा? So this is epidermis. यहां पे होगा vascular ring. Vascular ring का क्या मतलब है? What does it mean to have a vascular ring? Vascular ring means xylem and phloem. Vascular ring means xylem and phloem. Vascular bundles are arranged in a ring, right? इसी के बीच में this is the vascular cambium, right? इसी के बीच में vascular cambium है. इसके अंदर the tissue is called pith. यहाँ पे the tissue is called cortex. There's pith, there's cortex, and there's vascular ring, right? Now there is another cork cambium. Can someone tell me where is cork cambium? कोई मुझे बता सकता है cork cambium कहाँ है? This is the cork cambium, right? This is the cork cambium. Cork cambium और vascular cambium दोनों का function क्या है बेटा? Both of them can divide, right? Both are secondary meristems. So cork cambium can divide to produce secondary xylem and secondary phloem. I don't think my, okay, there's nothing. Okay, so cork cambium, can you people even listen to me? I mean, okay, my voice is clear at least. Let this be an example then. So cork cambium can be secondary xylem and secondary phloem, right? Secondary xylem or secondary phloem बोलने का मतलब है they are created as a result of redifferentiation, right? दोबारा ये मेरिस्टेम redifferentiate होके एक permanent tissue बनाया है, right? The same thing is in case of आपका cork cambium. Cork cambium creates more tissues on both sides, right? इसी को combine होके we start calling it cork, right? On the external and the internal, it starts creating more tissues, and this is what we create, start calling as cork. ठीक है? Okay, great. ठीक है. Anything that you want to ask me, guys? This is the time. Anything that you want to ask me? This is the time, guys. Okay, great. बहुत अच्छे. Okay, guys, I'm going to proceed ahead with Mentee now. I hope this was clear. I am sorry, but I'm really not going to continue there because फायदा ही नहीं है. So we can go over Mentee just after this. So what's the use of pith? Beta, it fills the space and it keeps on storing the substances, and later on वहां पे waste material भी store होने लगता है. Okay? Later on वहां पे waste material भी store होने लगता है. Okay, chalo. So guys, check out the iconic subscription. In addition to the plus, you get a very personal attention and a personal catering to this, and there's a lot of courses that you get access to with plus and iconic. One of those is Nirman is for foundation 10th, and those are the teachers for foundation 10, guys. You recognize all of these famous teachers that you already have been, right? Nirman के बाद आता है Umang. Umang is again a batch for class 9 students, right? And guys, these are your great, amazing teachers who will be carrying this for class 9. That is Rahul sir, Mukesh, Mohit sir, Manisha ma'am, Krishangi Sharma, and Neetu ma'am, right?
Sir, what is intercalary meristem? That's found on the nodes beta, that also elongates the plant. Uska bhi length growth mein hi hota hai. And guys, to help you people, finance these courses for you, we keep on regularly bringing you the test series, right? So these test series beta, okay, इस बार 5th June को होने वाला, that is tomorrow at 7 p.m. and we have also got a great foundation test series, okay, जिसमें top 30 लोगों को scholarship मिलती है. So this is like an amazing opportunity that you have. Top 3 people even get a complete 100% scholarship, right? There is a ton of workshops available that you can use to further your understanding, okay? Now I am going to move over to the Mentee quiz. Hopefully वो चलेगा, नहीं चलता है तो alas, that is the message that will be sent. Can't really help it, right? Just give me a quick minute so that we can broad on the Mentee. Guys, you already have the Mentee code. आपके पास Mentee code already है तो आप Mentee code खुद से लगा सकते हैं, but I will just take a minute to switch on the Mentee. ठीक है? Just give me one quick moment and I'll hop on to the Mentee. Come on. Sorry guys, just give me a moment. Okay, great, cool. Okay guys, come on. Quickly join the Mentee. Guys, Mentee is not working. Mentee code. एक second बेटा. Let me just disappear and show you the code. Just a moment. Okay, that's the code guys, 93977824. 93977824. We'll practice a few questions using this Mentee wala feature and then we'll go back. ठीक है? चलो. Quickly log on beta. That's the code 93977824. ठीक है? 93977824. Go ahead. So first few questions would be from the chapter cell. Cell से कुछ questions हम practice करने वाले हैं from different examinations. So guys quickly join कर लो. Those who haven't, quickly join please. Okay. Onion cells in desalinated water may be described as. Onion cells desalinated water. Desalinated water मतलब पानी से निकाल दिया गया. उनको सॉरी उसमें salt नहीं है, सिर्फ पानी है. What would you think? What do you think they could be called? Onion cells from desalinated water. Very good. They could be called as turgid. Guys, उनको हम turgid बुला सकते हैं and the reason that I can call them turgid is कि पानी बाहर से अंदर आएगा. When पानी comes under, the cell swells और जब cell swell करेगा, that is when I can call them turgid. ठीक है? Moving on to the next question. अगला question. Okay. Go ahead guys.
टिश्यूज, ब्लड सेल्स डू नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर. आपको ये पता है, देयर इज अ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन the blood cells and the plant cells. According to you, what would happen if you place a blood cell in the desalinated water for 30 minutes? बेटा यहाँ पे थोड़ा सोच के जवाब देना. डोंट गो फॉर द वेरी ऑब्वियस चॉइस, because sometimes the obvious answer might not be the correct one. Very good. Guys, most of you went for, I think, plasmolysis. बेटा plasmolysis में cytoplasm shrink करता है, right? The cytoplasm shrinks. Okay? On the other side, hemolysis इसलिए होगा क्योंकि animals के पास बेटा कोई cell wall तो होता नहीं है. They do not have any cell wall, right? इसीलिए क्या होगा कि जब अंदर बहुत सारा पानी आएगा, the RBCs will eventually swell, right? So बेटा पानी अंदर नहीं, अंदर आएगा, यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने डिसैलिनेटेड वाटर में रखा. इसीलिए जो आरबीसी है वो टूट जाएगा एंड इसका नाम होगा हीमोलाइसिस. आई कैन कॉल इट हीमोलाइसिस, कि ब्लड सेल हमारा टूट जाएगा. ठीक है. ओके, लेट्स फाइंड आउट हु इज वेयर. चलो अगला. Which part of a plant cell controls the movement of substances into and out of the cell? ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, कोई एप्लीकेशन नहीं. सो गाइस, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके जो होते हैं, दे इंटरनेशनल वाले, दे मेक श्योर देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, है ना. तो इसमें कोई भी ज्यादा ट्रिकीनेस नहीं आया गया है. वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने पढ़ा भी था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द गेट कीपर ऑफ द सेल, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका गेट कीपर की तरह काम करता है. दैट मीन्स इट विल मेक श्योर, इट विल कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग दैट्स कमिंग थ्रू इज थॉरली चेक्ड, है ना. सो गाइज, यहाँ पे आपको ये बात समझना पड़ेगा दैट नॉट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन कंट्रोल द स्मॉल बट ऑल्सो बिग मॉलिक्यूल्स. छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आराम से डिसॉल्व होकर अंदर आएंगे, यानी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी वी हैव प्रोटीन टनल्स एंड दीज प्रोटीन टनल्स डिसाइड who will come and who will go. Okay. बेटा आपको पता है ना, मैं आपका नाम चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, बट देयर इज अ रीजन आई एम नॉट चेंजिंग योर नेम, एंड द रीजन इज मैं आपको बार बार आपकी गलतियों से नहीं बचाने वाला. राइट गाइज, योर टीचर्स आर ह्यूमंस एज वेल, right? Try to understand the impact of the choices you make, right beta? Try to understand the impact of choices you are making on online platforms. So यहाँ ऐसे काम करने के दो नतीजे होते हैं. एक नतीजा, your teachers are very much humans. Someone might be just having a bad day and you are like putting an extra effort to make sure they regret coming and helping you. Okay? The second is someone just might use this. Please don't do this. इससे आप अपना फ्यूचर jeopardize करते हो बेटा. Let's use the time. हमारे पास अगर मौका है और समय है तो उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए. Don't do this, right? From past an hour, I was struggling to make sure that you have questions to practice, that you could do a mind map, and this is what you do. ठीक है. देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बुरा फील करवाना चाहता हूं, but I just want you to realize that all of your actions have consequences.
फॉर समवन और द अदर, हो सकता है आपके लिए ना हो, बिकॉज योर टीचर्स आर फॉरगिविंग इनफ कि छोड़ो यार बच्चे हैं, राइट, बट प्लीज बी थोड़ा सा माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट टू हेल्प यू. चलो, क्वेश्चन 4 of 12. Four freely cut potato cylinders were soaked for 1 hour in different salt solution. The potato cylinders were then pinned to the cork blocks. Two of the potato cylinders are shown. Which solution would cause the potato cylinder to be most flaccid? Most flaccid. Flaccid कब होता है? You have to understand that. ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लैसिड कब होगा? थोड़ा सा सोच के करेंगे तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल. Okay. Alas, not everybody thought it through. Okay, guys. Most flaccid मतलब when they don't have a particular shape, right? They don't have a particular shape का मतलब उनके तरफ से, उनके अंदर से पानी जा रहा है. The water is losing them, right? The water is losing out of the cell. वाटर सबसे ज्यादा कब जाएगा? When you place them into the most hypertonic solution that's possible. आप अगर उनसे सबसे ज्यादा hypertonic solution में रख सकते हो तो that is when they would be most flaccid. और उस लिस्ट में सबसे ज्यादा hypertonic solution क्या था? 1, right? That is why answer could be 1. Very good समय, बहुत अच्छे, really good. चलो, अगला क्वेश्चन, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन 5, guys. Guys, all of these questions have been picked from either Cambridge or the IJSO papers. I think these questions have been picked from Cambridge 2023 का scheme paper और specimen paper से pick हुआ है, ठीक है? So all of these questions were not created by me, rather they were picked from some of the most standard question papers around the world. This one was from Cambridge paper. अभी तक सारे questions Cambridge paper से थे, जो specimen paper उनका release हुआ था. What is the role of messenger RNA? mRNA का क्या रोल होता है सेल में? Okay, the role of messenger RNA, guys, you already know, they carry the information outside the nucleus. Why? Because DNA, the genetic material, is inside the nucleus. आप RNA, that is the mRNA, कैसे बनाते हो? DNA को पढ़ के. You read the DNA and you create a strand of RNA. This RNA carries all the information outside the cell. वहां पे राइबोसोम इस RNA को पढ़ के प्रोटीन्स बनाते हैं, right? They keep on adding amino acids to make proteins. This, बेटा, यही आपका ट्रांसलेशन है. तो इसमें mRNA का रोल क्या था? इंफॉर्मेशन को अंदर से बाहर तक लेकर आना, ठीक है? चलिए, let's find out who is there, who is where. चलो, chalo guys, moving on to the next question, guys. Come on, guys, feel free to share these sessions with your friends as well, because they might receive a great deal of help. The diagram shows the cell of an organism. The nucleus contains 12 chromosomes. After this cell divides by mitosis, how many chromosomes would be present in one of the daughter cells? इस डायग्राम में एक सेल है जिसमें 12 क्रोमोसोम्स हैं. ये सेल अभी माइटोसिस से डिवाइड करने वाला है इनटू डॉटर सेल्स. What would be the number of chromosomes in the daughter cells? एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया गया.
all you need to know is understand what's mitosis, and that's okay, right? Okay, that is very correct. The correct answer was B. Beta, mitosis is equational division. Equational division का मतलब है the number of the chromosomes would remain same, and when it does remain same, that means 12. 12 था तो 12 ही रहेगा. There would be two cells, दोनों में 12 chromosomes होंगे. गुड आफ्टरनून मनोज. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन आउट ऑफ 12. A shows the bright white line in the mid. It stands for what? आपके पास एक माइक्रोग्राफ है, इसमें आपके सेल्स को नंबर किया गया है C1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? और there are bright lines separating the cells, right? और उसके बीच में जो लाइनिंग है, आपका क्वेश्चन उस लाइन से है, right? जो ब्राइट व्हाइट लाइंस इन द मिड, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो डार्क लाइन है, उसको पूछा गया है व्हाट इज दैट? ए, राइट? बी केयरफुल गाइस, सब उस ब्राइट व्हाइट लाइन के बीच का स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है. वेरी गुड, इट वाज मिडिल लैमेला. आपको पता है दैट अ सेल, प्लांट सेल्स आर सेपरेटेड बाय सेल वॉल. सेल वॉल के बीचों बीच देयर वुड बी मिडिल लैमेला which would be like the cementing material. बेटा ठीक है, चलिए. They say action have consequences. Okay guys, so we would be jumping on to the point of tissues. अब हम tissues के ऊपर jump करने वाले हैं, ठीक है? अभी तक हम सेल के क्वेश्चंस कर रहे थे. Okay, stuttering has started again. Sir, if the middle lamella dilution causes the jelliness of mango, then why isn't the apple have the jelly-like character? Beta, two things. It's not exactly just the middle lamella. It's the entire cell का cytoplasm as well, right? देखो, the cells eventually आपके पास complex sugars हैं सम्यक. Complex sugars, they start breaking down into simple sugars. They lose the structural integrity. इसीलिए it becomes sushi, you know, sushi mushi. Okay, because of that reason, not just the middle lamella. Middle lamella is not the only reason. Okay. So question क्या था? What is the function of the specialized plant cell? You can quickly recognize बेटा that this specialized plant cell जो आपके स्क्रीन पे था, that was what? A root hair cell. ये एक बाहर एक्सटेंशन क्यों बनाता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. व्हाई डज इट नीड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया? टू रीअब्सॉर्ब, सॉरी नॉट टू रीअब्सॉर्ब, टू सिंपली अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ आयंस. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी. क्विकली स्विच टू मेंटी इफ यू आर ऑन यूट्यूब राइट नाउ. जल्दी से मेंटी पे स्विच कीजिए. चलते हैं आगे. The picture reflects. Read the picture carefully. I have given you 45 seconds to read what the picture wants to say. Right? Picture को खुद से पढ़िए. This was an extract pulled from a book. Right? So you have to read the picture and you have to tell me what is it talking about. ये किस चीजों के बारे में बात कर रहा है? Is it talking about cell division? Is it talking about cell differentiation? Is it talking about cell de-differentiation or re-differentiation? Come on guys. Aha, great. So guys, only one. Why? Guys, so यहाँ पे there were cortex cells and these cortex cells were eventually becoming into another type of cells. एक स्पेसिफिक जीन का मेंशन था ग्लाब्रा.
ओके एक स्पेसिफिक जीन का मेंशन था कि ये जीन एक्टिवेट होने से एक पर्टिकुलर सेल वाज स्पेशलाइजिंग। बेटा आपको आपको डिटेल नहीं पढ़ना था, यू जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड कि हम एक जीन के ट्रांसक्रिप्शन के चेंज की बात कर रहे हैं, दैट सम जीन्स आर बीइंग स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ, दैट्स इट। एंड वी अंडरस्टूड दैट जब हम जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स differentiation. Simple. Okay? चलो go ahead guys. Question 10th of 12th. Again an easy question, simple diagram देख के पूछ लिया, what is the name of the cell labeled X? एकदम सिंपल है, कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है, दिस इज अगेन फ्रॉम कैम्ब्रिज वाला पेपर, कोई ट्विस्ट और टर्न नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सर आई जस्ट गेस्ड अपॉन कॉर्फ ओके ओके हाँ, that is what, see what was needed was just to understand what the picture wanted to say. Okay, very good, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। So yes guys, we are talking about यहाँ पे क्या, पेलाइसिड मेसोफिल और पेलाइसिड पैरेन्काइमा। नाउ पैरेन्काइमा और मेसोफिल के बीच में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मेसोफिल इज सिंपली द नेम गिवन टू द परमानेंट टिश्यू विद इन द लीफ, उसी को हम कहते हैं आपका mesophyll, right? They are made up of cells, parenchymatous cells. The parenchymatous cells could be pellicid, closely stacked to each other, or spongy, have a lot of air spaces between them. अगर spongy है तो air का diffusion कराएंगे, pellicid है तो एकदम साइड साइड बंधे हुए हैं और उनमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट होने का फायदा क्या है, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम कहते हैं कि पैरेन्काइमा इज द मेन, द चीफ मेटाबॉलिक टिश्यू ऑफ द प्लांट, क्योंकि एक्चुअली वन ऑफ द चीफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आपके प्लांट्स में होता है वो फोटोसिंथेसिस है, और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, आपके पैरेन्काइमा में हो रहा है। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट हु इज वेयर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। Question 11. Sir, are there some mesophyll cells which are not chlorenchyma? बट स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा तो नहीं बोलते यार। देखो क्लोरेन्काइमा इज जस्ट एन एडिशनल नाम सम्यक। फॉर एग्जाम्पल, all cardiologists are doctors, all doctors are not cardiologists, वही वाला फर्क है बेटा, राइट? So if you are a chlorenchyma, you are parenchyma. क्या non chlorenchymatous parenchyma हो सकता है? बिल्कुल, right? But again, they would have specialized into some different task. Bundle sheath cells, what are they? They are simply some parenchyma but with another set of functions, right? उनके अंदर ज्यादा क्लोरोफिल नहीं होगा, right? वो आपका C4 cells में involve हो जाते हैं. So that is the whole deal. Okay, the question was what is the function? Okay. सो गाइज हम ये रूट का एनाटॉमी था, राइट? एंड रूट में हमने जो ये बैंड्स देखे थे, हमने बोला था दैट दिस इज द जाइलम, राइट? सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, इट देखो मैकेनिकली वो ऐसे ही सपोर्ट करते हैं ब्रिजलता, जैसे कि ट्यूब ऑफ अ व्हील सपोर्ट्स इट, इट्स जस्ट अ फोर्स। तो क्योंकि पैरेन्काइमा इज वेरी स्कुशी मुशी, it tries to give the support to the tough external layers of the plant, जैसे कि आपका ट्यूब सपोर्ट करता है बाहर के टायर को, सिर्फ एकदम बिल्कुल उसी तरह। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज समथिंग यूज्ड इन द लैब टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ योर मोनोसैकेराइड, मोस्ट नॉट ऑल, बट दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स।
चलो, great, great. Okay, I think we are moving towards the last question. We are, ये easy ही होना चाहिए शायद. हाँ, बहुत easy है. How do carbon dioxide and oxygen move into and out of the mesophyll cells? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेसोफिल सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है? सिंपल फंडा, नो फास्ट, नथिंग लाइक दैट, है ना? एंड ऑस्मोसिस इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स. नो बेटा, जहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वहां यू विल फाइंड इट. एंड गाइज, यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं, यहाँ पे वी विल बी कॉलिंग सिंपल डिफ्यूजन, राइट? देखो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ मेम्ब्रेन दैट कैन बी सेमी परमिएबल टू सम थिंग्स, only then we will say osmosis. Indeed, gases are moving across the plasma membrane, but via simple diffusion. None of the gases are big enough to be a problem for your plasma membrane. जब हम solvents की बात करते हैं, solution की बात करते हैं, then we have two different types of molecules which can be differentiated by the plasma membrane. एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक को जाने की आजादी होगी, दूसरे को जाने की आजादी नहीं होगी. बट जब हम गैसेस का बात कर रहे हैं बेटा, there is nothing like that. ऐसा कुछ भी नहीं है, right? That is why it's simple diffusion, not osmosis. Okay, let's find out who is where. बहुत अच्छे, very good, बहुत अच्छे. So guys, I think we have Samyak as the winner. Great job beta, well done. And guys, again, Mentee या कोई भी क्विज को just use as a standard to evaluate yourself and improve, बस, है ना? उसको अपना measure मत समझना, right? So well done Samyak. Next I have Ashu, I have Vinayak, I have Piyush, there's someone as Hai, then I have Sarah, Aditi and Stingelicious. Well done, greatly done guys. So guys, as you already know and I have already spoken about, आज का ये session was all about प्लांट टिश्यू का माइंड मैप एंड रिवीजन क्वेश्चंस. 3:30 बजे ग्रेड 10 के लिए हार्ट होने वाला है. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इन दी सेशन. एंड रात को 8 बजे वी आर प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशन का IJSO. व्हाट इज स्टेले? बेटा, आपका पूरा वैस्कुलर सिलेंडर एंड द टिश्यू इन बिटवीन देम, उसको स्टेले कहते हैं. ये टर्म थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आया है बेटा, क्योंकि पहले माना जाता था कि वो पूरी चीज एक, वो जो हिस्टोजन थ्योरी, सम्यक यू रिमेंबर, यू वर द वन शायद ना जिन्होंने पूछा था हिस्टोजन थ्योरी के बारे में. सो ये हिस्टोजन थ्योरी की उपज थी. ये जो पूरा अंदर वाला है उसको स्टेले कहेंगे और दैट कम्स फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन, राइट? बट देन इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग एंड नाउ वी डोंट टॉक अबाउट इट. ठीक है सर, आई हैव नॉट स्टार्टेड 9th ICSE bio. Can you tell please? Always start from the first, Ashutosh. Always start from the first. Okay. So guys, very very important. Make sure कि आप रात के 8 बजे क्लास में आए. And guys, एक humble and honest suggestion. देखो, आप ये उम्मीद मत करना कि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे. If I am pulling through those papers, वो क्वेश्चंस हार्ड होंगे बेटा. And you have to try to master them. आप भी डरोगे, मैं भी डरूंगा, but together we can surely win it. Okay, so guys, I'll meet you people at 3:30. Okay, and I hope to see you there. And if you haven't already checked out the Plus subscription, do log into Unacademy's website, check out the subscription. There's Plus and there's Iconic. Plus gives you access to batch courses, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, and Iconic gives you access to a one-on-one management systems, right? So I will see you soon guys, and feel free to use my code if you're planning on buying subscription, because buying a Plus subscription using a teacher's code gets you extra 10% off, and that means that you can save around 19 to 2000 on any subscription. Okay? So guys, that's it for me. Thank you so much. Bye bye. See you in half an hour. Thank you so much guys. Thank you so much.